Hello everyone. In previous lecture, I discussed about the various examples of turning moment diagram and flywheel and how we found the mass of flywheel using various parameters or power developed in flywheel, then the coefficient of fluctuation of speed, coefficient of fluctuation of energy. And in today's lecture we will discuss about the dimensions of the flywheel. Let us start. So first we discussed about the dimensions of flywheel rim. So what is flywheel rim? Here is the portion of the, this is the shape of flywheel is something like this, and there is a inner spokes in this, and in center there is a hub. This portion is hub, these are the spoke, and this outer portion or the wheel type shape is called as rim. And we have to find the dimension of the rim of flywheel rim. So consider a rim of flywheel as shown in figure over here, and the here we will take a small area of this with angle d theta at angle theta. This r is the radius of the rim, and here the p is the pressure acting on the flywheel rim, then t is the thickness of the rim. So one by one, here there is written all the parameter. Capital D is the mean diameter of the rim. Mean diameter means which the average diameter. This is the mean diameter. Capital D is the mean diameter of in meter. Then capital R is the half of the diameter, which is the mean radius of the rim in meters. Then capital A is the cross section area of the rim, which is equal to pi by 4 d square. But here it will be the minus of this outer periphery, minus this periphery. It will be the area of the rim in meter square. So rho is the density of in kg per meter square. Then there is n, the speed of flywheel. Omega is the angular velocity of the flywheel in radian per second. Small v is the linear velocity. Small v is linear velocity at mean radius in meter per second, that is omega into r, or pi dn by 60. Omega into r, omega is equal to pi dn by 60, and capital R, we know that the v is equal to r omega. This is the equation, familiar equation. The linear velocity can be converted into angular form, or from angular velocity we can find the linear velocity, and here omega is equal to pi dn by 60. And sigma is the tensile stress or hoop stress in Newton per meter square due to centrifugal force. Whatever the centrifugal force acting, due to that sigma will be the tensile stress induced, or hoop stress induced in the rim, and due to the centrifugal force. Consider a small element of rim as shown in figure. Here first we take here one small element is taken, and that is shaded like this, and let it be subtended at an angle d theta at the center of flywheel. जो सेंटर है उससे वो डी थीटा एंगल इंक्लूड बनाता है. वॉल्यूम ऑफ स्मॉल एलिमेंट, जो वॉल्यूम होगा वो कितना होगा, जो भी एरिया है इनटू थिकनेस, और जो थिकनेस है वो कितनी होगी, रेडियस आर इंटू डी थीटा. डी थीटा जो है वो एंगुलर जो एंगल है वो है, और जो भी पेरिफेरियल एरिया है, जो भी स्मॉल एलिमेंट का वॉल्यूम होगा वो, ये वॉल्यूम किस फॉर्म में होगा, ये देखो ये ऐसे शेप में होगा, और
उसकी कुछ थिकनेस भी होगी इस तरीके से। सो ये इस टाइप में होगा ये पूरा एरिया, ठीक है। और जो ये स्मॉल एलिमेंट है उसका टोटल एरिया जो है वो दैट विल बी इक्वल टू आर इंटू डी थीटा। जो डी थीटा है वो यहाँ पे एंगल है डी थीटा, और जो कैपिटल आर है वो है रेडियस, और जो एरिया है वो यहाँ पे एरिया ऑफ रिम कितना है कैपिटल क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द रिम। यहाँ पे एक क्रॉस सेक्शन एरिया लेंगे, दिस विल बी द एरिया। सो यहाँ पे इस सरफेस जो यहाँ पे इस टाइप का शेप मिलेगा, सो जो एरिया होगा वो ए, और जो इंक्लूडेड एंगल होगा डी थीटा इंटू आर, तो वो उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका टोटल वॉल्यूम हमको मिल जाएगा ए इंटू आर डी थीटा। नेक्स्ट वी हैव टू फाइंड द मास ऑफ द small element. Mass of small element is given by dm, as we have taken here the small element. So we know that the density is equal to mass per unit volume. So we have to find the mass is equal to density into volume, and density is rho. So we can find the mass of small element, and the centrifugal force on the element acting is the radially outward direction. We know that here the centrifugal force will be acting outward direction, that is small df. Now the centrifugal force equation is m omega square r, but here the r is equal to capital R and mass is small element, so it is small dm, and for dm it is equal to rho a into r into omega square, and here there is the d theta, which is the angle, which is we earlier found the mass is equal to area into radius into this mass. The equation of the dm was rho into area into d theta into capital R, but here there is r omega square, so r becomes r square, and there is omega square. So this is the equation of the centrifugal force. Next, the vertical component of the centrifugal force. Here there will be two components. First one will be the vertical component, and there will be horizontal components. Here it is the angle theta. So here vertical component will be df sin theta, which is given by this equation, and the total vertical upward force tending to burst the rim across the xy section. जो भी टोटल फोर्स है जो रिम को यहाँ पे ब्रेक कर सकता है वो कितना है, यहाँ पे p जितना है, और जो अपवर्ड फोर्स है वो कितना है df sin थीटा. सो दैट विल बी इक्वल टू जो अपवर्ड फोर्स यहाँ पे लगेगा वो कितना होगा, फ्रॉम 0 टू पाई, यहाँ पे हाफ पोर्शन में लगेगा, तो इसका इंटीग्रेशन करना होगा यहाँ पे 0 टू पाई ऑफ दिस वर्टिकल कंपोनेंट. वी विल गेट द वैल्यू एज, यहाँ पे जो कॉस पाई है उसकी वैल्यू कितनी होगी, जो कॉस 0 है वो है 1, सो कॉस पाई विल बी 1, सो इट विल बी -1 माइनस कॉस 0 है वो 1 है, तो माइनस माइनस 2 हो जाएगा, और यहाँ पे -2 जो है वो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ठीक है. और यहाँ पे क्या होगा कि ये जो वैल्यू है दैट विल बी इक्वल टू द 2 रो ए आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, और ये यहाँ पे हमको वैल्यू मिल जाएगी. इसको हम वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप लेते हैं. माइनस कॉस पाई माइनस कॉस 0. So whatever sorry here it will be first let us take यहाँ पे क्या होगा कि जो माइनस है उसकी वजह से यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा. सबसे पहले देखो ये माइनस यहाँ पे आउटवर्ड डायरेक्शन में है, आउटवर्ड साइड में है, सॉरी. देन देर विल बी कॉस पाई माइनस कॉस
0. सो जो है वो इनसाइड जाएगा तो क्या होगा, माइनस कॉस पाई प्लस कॉस 0. और यहाँ पे कॉस 0 की वैल्यू क्या है 1 और कॉस पाई की वैल्यू क्या है -1. तो जो माइनस माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा +1 और जो +1 यहाँ पे क्या होगा इक्वल टू 2. सो यहाँ पे आया 2 रो ए आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर. This will be our equation 1. This vertical upward force will produce tensile stress or hoop stress, also called as centrifugal stress or circumferential stress, and it is resisted by 2p. जो भी ये है ये वर्टिकल डायरेक्शन में अपवर्ड फोर्स क्रिएट करेगा और उसको रिजिड यहाँ पे 2 साइड पे जो p फोर्स है उसकी वजह से यहाँ पे रेजिस्ट किया जाएगा बाय द 2p, 2 टाइम्स p. So that will be 2p is equal to p is equal to जो प्रेशर है जो भी स्ट्रेस है that will be equal to स्ट्रेस का इक्वेशन क्या है प्रेशर अपॉन एरिया. सो जो भी प्रेशर है that will be equal to sigma into a and that is 2 times, so it will be 2 times sigma a. This is equation number 2, and comparing both equation we will get the equation of the stress that will be equal to rho r square omega square, and we know that the small v is equal to r omega, so we have put the value over here rho v square, and we will get the v value linear velocity in form of sigma and density. Let me enlarge this will be the equation of the sigma by p. Small v velocity is equal to under root sigma by p. This will be our third equation, and we know that the mass of rim is equal to volume into density, and volume here the volume is equal to area into pi d, the periphery, or we can say 2 pi r. Area into periphery, it will be equal to the volume, and rho is the density, and we can find the capital A is equal to m upon pi d rho. So this will be our fourth equation, and from equation third and fourth we may find the value of the mean radius and cross section area of the rim. यहाँ पे जो थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशन है उसकी यूज़ करके हम क्या फाइंड कर सकते हैं मीन रेडियस और जो भी क्रॉस सेक्शन एरिया है रिम का वो हम फाइंड कर सकते हैं. और अगर वो क्रॉस सेक्शन एरिया रेक्टेंगल है तो उसके लिए तो सिंपल एरिया क्या होगा b इंटू टी. द b इज़ द विड्थ एंड t इज़ द थिकनेस ऑफ द रिम अगर रेक्टेंगुलर शेप है तो. So this is about the dimension of the flywheel. Let us take one example of the flywheel which we discussed some earlier topic from the earlier topics. So here the example is an Otto cycle engine develops power P is equal to 50 kilowatts at RPM n is equal to 1 RPM with 75 explosions per minute, and the changes of the speed from commencement of the end of power stroke must not exceed 0.5% of mean on the either side, and find the mean diameter d mean of the flywheel and suitable rim cross section having width 4 times of the depth, so hoop stress does not exist. Sigma is equal to 4 MPa. Assume that the flywheel stores 16 by 15 times the energy stored by the rim, and the work during power stroke is 1.4 times the work done during the cycle. The density of the rim material is 7200 kg per meter cube. So here there is given data. So first we convert the power into watt, then RPM into angular velocity, that is omega is equal to 2 pi n by 60, which will be in radian per second. Then small n number of explosion is given 75. Sigma is in megapascal, so we'll convert into the megapascal is equal to Newton per
mm square, 1 megapascal is equal to, so here we will convert into Newton per meter square, so it will be 10 raised to 6. We will multiply by 10 raised to 6, and small r, or we can say rho, density of the rim material is 72 kg per meter cube. Find out of the all, let us find the mean torque transmitted by the engine or flywheel. We know that the power transmitted P is equal to T mean into omega, and omega we know and power transmitted we know, so we can find the mean torque. So this is the value of the mean torque, and since the explosion per minute are equal to n by 2, therefore the engine is a 4-stroke cycle engine, and the turning moment diagram of 4-stroke engine, here it is shown in the figure. This is the turning moment diagram. Here the explosions are per minute, so are equal to capital N by 2, half of the total revolutions, and the engine is a 4-stroke engine, so the turning moment diagram will be like this. Here there will be this is the crank angle versus turning moment diagram. In suction stroke we will have 0 to pi, from pi to 2 pi we will have the compression stroke. So what will happen, the piston moves from suction stroke to the piston moves first from suction stroke to downward direction, then it will move to upward direction in the compression stroke. So then it will move again in the downward direction, which will be our the expansion or the power or working stroke. Then there will be the piston will move in upward direction again, so that will be the our exhaust stroke from 3 pi to 4 pi. So the work done will be equal to mean torque into angular rotation, that is theta, and the theta is equal to total 4 pi. So this will be the our work done per cycle. Now we know that the work done during power or working stroke is 1.4 times the working, or let us see over here, it is should not the change of speed from the commencement of the end of power stroke must not exceed 0.5% of the मीन ऑन आइदर साइड. जो मीन है उसकी आइदर साइड में यहाँ पे 0.5 से एक्सीड नहीं करना चाहिए, और जो भी यहाँ पे वर्क डन ड्यूरिंग पावर स्ट्रोक है वो 1.4 टाइम्स ज़्यादा है वर्क डन ड्यूरिंग द साइकिल. जो वर्क डन यहाँ पे किया है उससे 1.4 टाइम्स यहाँ पे ये ज़्यादा है. So it will be 1.4 times into work done per cycle. So we will get work done during power stroke or working stroke, and the work done during the power stroke is shown by the triangle ABC. This triangle shows the work done during the power stroke, in which the AC is equal to pi radians and height BF is equal to T maximum. The A to C distance is equal to pi, because 3 pi minus 2 pi, and the total distance B to F is equal to T maximum. Then work done during working stroke is equal to 1 by 2 pi into T maximum. So यहाँ पे जो वर्क डन कितना मिलेगा 1 by 2 इंटू ये डिस्टेंस pi into ये vertical distance, that is T max, that is T max. This is the work done during working stroke, and that is equal to 1.5751 of T maximum. This is our second number equation. So we will compare both equation and we will get the value of T maximum, what is the maximum torque. And we know that the excess torque is given by the BG, B to G. ये जो है excess torque हमको मिलेगा. यहाँ पे जो required है वो कितना है, यहाँ पे mean line है T mean, तो जो भी mean है
उतना ही रिक्वायरमेंट है, तो यहाँ पे ये जो अपर मिलेगा वो कितना होगा, B2G पॉइंट है, यहाँ पे ये G पॉइंट है, ये यहाँ पे B पॉइंट है, तो जो B2G है वो कितना मिलेगा, एक्सेस पावर हमको मिलेगा, और एक्सेस पावर कितना होगा, दैट विल बी इक्वल टू B2F माइनस B2G और F2G। यहाँ पे ये टोटल लाइन है, जो भी टोटल B2F में से F2G माइनस करेंगे तो हमको मिलेगा एक्सेस पावर और एक्सेस टॉर्क, सो हियर the B2F distance is equal to T maximum and F2G is the T mean, and we know the both value, T mean we earlier derived and T max we derived over here. So we will have the excess work, and from similar triangles there is a triangle of BDE and ABC. Now we can consider that the DE by AC is equal to BG by BF. The D to E distance का रेशियो और जो A to C का रेशियो है that will be equal to B to G divided by B to F. इन दोनों का रेशियो लेंगे तो वो दोनों हमको सेम मिलेगा, और D to E इज इक्वल टू हमको मिलेगा, जो D to E हमको फाइंड करना है तो वो हम इस इक्वेशन से फाइंड कर सकते हैं, और जो B to G है वो हमको मालूम है, दैट विल बी B2G हमने यहाँ पे फाइंड किया है, जो भी T एक्सेस है, यहाँ पे BF है वो भी मालूम है, दैट इज़ T मैक्सिमम, एंड A to C दैट इज़ A to C यहाँ पे है पाई, सो वो यहाँ पे पुट करेंगे तो हमको D to E डिस्टेंस मिल जाएगा, और उसका यूज़ करके हम फाइंड कर सकते हैं, वी नो द फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी इज़ गिवन बाय द area of triangle. This will be the fluctuation of energy by the area of BDE, which will be equal to 1 by 2 B2G into D2E, by B2G into D2E, and we know the value of BG and we know the value of DE. We will put both the value and we will find the maximum fluctuation of energy by the equation delta E. And next we will find mean diameter of the flywheel. Let the capital D be the mean diameter of the flywheel in meters and V be the peripheral velocity of the flywheel in meter per second. Now we know that the hoop stress is given by this equation, sigma is equal to rho V square. Earlier we derived this equation. We know value of rho, we have to find small v, we know value of sigma that is given, and we can find the value of v, that is the peripheral velocity of the flywheel, and we know that the v is equal to pi dn by 60, so from that we can find the diameter of the ring, so that will be the our mean diameter of ring. ठीक है, जो mean diameter है वो इस वे में हम find कर सकते हैं. नेक्स्ट इज क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शन डायमेंशंस ऑफ द फ्लाईव्हील, यानी कि क्रॉस सेक्शन डायमेंशन हमको फाइंड करना है. सपोज द टी इज द थिकनेस ऑफ द रिम इन मीटर्स एंड बी इज द विड्थ ऑफ रिम इन विच इज इक्वल टू 4t. ठीक है, विड्थ यहाँ पे 4t है और t जो है वो थिकनेस है. सो एरिया जो होगा वो कितना होगा, b इज इक्वल b इंटू टी, दैट विल बी, यहाँ पे अज्यूम किया गया है कि जो विड्थ है वो 4 टाइम्स थिकनेस है. ठीक है, तो एरिया मिलेगा हमको 4t स्क्वायर. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस फाइंड द मास ऑफ फ्लाईव्हील रिम. सबसे पहले मास फाइंड करेंगे. सपोज मास इज इक्वल टू m स्मॉल m एंड E इज द टोटल एनर्जी ऑफ द फ्लाईव्हील इन न्यूटन इंटू मीटर. सो सिंस द फ्लक्चुएशन ऑफ द स्पीड, यहाँ पे जो एग्जाम्पल में दिया होता कि जो फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड है वो 0.5% है ऑफ द मीन स्पीड on either side, therefore the total fluctuation will be 1%. जो टोटल फ्लक्चुएशन होगा वो 1% ऑफ द मीन स्पीड होगा, और जो कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड हमको यहाँ पे मिल जाएगा, इसको कैपिटल N से डिवाइड करेंगे तो n कैंसिल हो जाएगा, तो
तो यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड मिल जाएगा. एंड वी नो दैट द मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी इज गिवन बाय द डेल्टा ई, and delta E we can find it, the delta E is equal to 2 times CS into E. सो यहाँ पे E के फॉर्म में हमको मिलेगा, जो CS हमको यहाँ पे मिल गया, और डेल्टा E हमने मैक्सिमम एनर्जी है वो हमने आगे फाइंड की हुई थी, मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी थ्रू द एरिया, एंड वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ स्मॉल e, sorry capital E, and since the energy stored in the flywheel is 16 by 15 times of the energy stored in rim. जो फ्लाईव्हील की एनर्जी है वो रिम की एनर्जी से 16 by 15 टाइम्स है. तो जो एनर्जी स्टोर्ड इन रिम है वो हम उसको फाइंड कर सकते हैं. रिम के अंदर की एनर्जी है वो 15 by 16 होगी. ठीक है, समझो ये एनर्जी है, दैट इज़ ऑफ फ्लाईव्हील, and the flywheel energy just stored by is 16 by 15 times energy stored in rim. तो हम एनर्जी स्टोर्ड इन रिम फाइंड करेंगे, तो यहाँ पे ये यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे ये रेशियो क्या हो जाएगा 15 by 16 होगा. यहाँ से निकल के यहाँ पे आएगा तो हमको मिलेगा 15 by 16 ऑफ E. E इज ऑफ फ्लाईव्हील. ठीक है, सो वी कैन फाइंड द एनर्जी स्टोर्ड इन द rim, and we know that the energy stored in the rim is equal to, that is E rim is equal to 1/2 mv square, and we can find the value of mass m as we know the value of V, and we know the value of energy stored in rim. So this will be the our mass of the rim, and we know that the mass of the flywheel rim is equal to, m का इक्वेशन हमको मालूम था, m इज इक्वल टू रो इंटू वी. जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम विल बी इक्वल टू पाई डी इंटू एरिया, जो क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू पेरीफेरी, पाई डी और 2 पाई आर. वी नो द वैल्यू ऑफ डी एंड वी नो वैल्यू ऑफ एरिया. एरिया इज इक्वल टू 4t स्क्वायर, एंड डायमीटर इज वी हैव फाइंड हियर earlier we found the diameter as well, so we will use over here and we will find the value of T, that is the thickness of the flywheel rim. So this will be the our answer of the thickness of flywheel. So and we will find the width of the flywheel, which is the 4 times of the thickness. So this is the end of the example. Thank you very much for listening me carefully. Have a nice day.